interference figure. So uniaxial interference figure, there are three types of uniaxial interference figure. One is a centered, off-centered, flash figure. Centered, off-centered, flash figure. So all depend upon the orientation of the optic axis. Optic axis orientation कौन से अनुसार different types of interference figure produced with. In case of uniaxial. So first is your optic axis figure. So in optic axis figure, the optic axis it is perpendicular to the microscopic stage. Microscopic stage को टा perpendicular था. So सेटमें तुम्हारा center रे पूरा produce हुए मेलाटोप. मेलाटोप produce हुआ center रे. So जो तुम्हें देखियो ये optic axis ठीक है center देख pass करियो. So when the optic axis is vertical, it will produce a centered uniaxial figure or we can say optic axis figure. तो हमें centered uniaxial figure कोई परिवा or otherwise we can say optic axis figure where the optic axis is perpendicular to the microscopic space. So it is तुम्हारा optic axis represent होगा and these are two isogam. What is the off-centered figure? Off-centered figure obviously it will not at the center. Center रो से shift ही से इतने तार उसका off-centered. So it will occur when the optic axis is inclined to the microscopic stage. So optic axis का microscopic stage को inclined हो. So जदि inclined रहुची ताले the melatop it will fall within the stage or outside the stage. Within the stage पढ़ परिबो नले outside the stage पढ़ परिबो. यदि एतिक inclination हला it will be within the stage. जते inclination बॉडी चलिबो it will be outside the stage. So it has off-centered figure. जो आडू देखिबो melatop रा thickness sorry जो आडू देखिबो isogar रा thickness डिक्रीज करी जाउची से पट तमरो मेलाटोप आसी तब तुम जानिबो जे ई साइड रे मेलाटोप आसी बिकॉज़ कि दिस साइड तुम आइसोगार इज बिकमिंग थिनर ई जगह तो ए आडू थिनर हे जाउची तुम जानिबो जे ई पटे मेलाटोप आसी then another figure is your flash figure. The optic axis is horizontal, optic axis is parallel to the microscopic stage. से केस रे complete stage will become dark, total मिनट पूरा dark दिखाओ अब जस्ट खाली साइड रे टिकट के लाइट देखा. सो इट इज अ फ्लैश फिक्स कौन फ्लैश फिगर पर तो गोटे ऑप्टिक एक्सिस वर्टिकल रहला गोटे ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइन रहला गोटे होसी ऑप्टिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहला. पहला तीनटा टाइप ऑफ फिगर. सो दिस इज it explains the formation of uniaxial interference figure. এটা কেমতি কোন হিসাবে যাଉଛି দেন এই পয়েন্ট রে মোর লাইট গুলা আইসোগার को ইনক্লাইন ভাইব্রেট করছନ୍ତି এই জায়গায় আইসোগার को ইনক্লাইন এই জায়গায় আইসোগার को প্যারালাল ভাইব্রেট করছନ୍ତି. তো যেতে তুমি বাহার কু ଯିବ সেতে এই জায়গায় যেতে কি তোমার রিটার্ডেশন আসিব যেতে বাহার কু ଯିବ সেতে রিটার্ডেশন বডি বডি চালিব. So it is with centered uniaxial interference figure रे देखिबा what is the तुम्हारा vibration direction of ordinary ray and extraordinary ray हम केमति रिप्रेजेंट करंती. तो ordinary ray always vibrates tangential to the circle. circle को tangential vibrate करे तो जगह तुम्हारा ordinary ray टा it will be tangential to the circle and external ray should be perpendicular. So external ray को perpendicular हो तो it will be perpendicular like this. जोटा कि जो कहबा ई रे so it is along the radius or you can say radial. So ordinary ray it vibrates tangential to the circle or you can say tangential to the isochrome jago तुम कहि परिबो and it is perpendicular e ray it is perpendicular to ordinary ray it is along the radius for the radial. बुझ पहला तो इधर आउछ तुम आइसोगार आउछि मेलाटोप. This is the off-centered figure जतरे कि मोर डिफरेंट पोजीशन को से इंक्लाइन ही परियो. So it can be inclined suppose कि this is the stage it can incline towards east towards north towards east towards south towards west or in any direction. So
जो डायरेक्शन को से इंक्लाइंड हो से अनुसार क्रॉसटा से जगह रे प्रोड्यूस हो. So it may be within the stage or it may be outside the stage of center. जो आड़ को तुम्हारा आइसो गया थिनर ही जीवा से आड़ को you'll get your मेलाटोप इन ऑफ सेंटर फिगर कारण सेंटर रे तुम जानि जे सेंटर रे मेलाटोप अछि बट ऑफ सेंटर रे जदि से मेलाटोपटा बाहर पडुछि तुम को साइड रे अछि केमि जानिबो कि जो आड़ को थिनर आ मेलाटोप सब बेले थाए वेयर द आइसोगार इज थिनेस्ट मेलाटोप जो थाए जेति आइसोगार इज कोन गार इज द थिनेस्ट आइसोगार से जगह थिन थाए सब पर तब देखा तुम्हारा ऑप्टिक साइन डिटरमाइन करा जाए होची यूजिंग इंटरफेरेंस फिगर सो ऑप्टिक साइन डिटरमाइन करा पहले हमको आ गोटे जिंस ऐड करे पड़े दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी प्लेट so there are three types of accessory plate we use one is gypsum plate mica plate and quartz plate gypsum plate it is used for lower order interference color by gypsum use हुए और mica और quartz use higher order में use तो gypsum plates these are minerals सेवा कौन सा मिनरल थे ताका पर्टिकुलर गोटे रिटार्डेशन था जोटा कि 550 nm होची gypsum plate रो mica plate रो 147 nm तो quartz रो वेरी करे है ना so these plate when it will add to the microscope it will change the color within the stage रे color change कर It is like कि तुम्हें धरा कौन सी सनग्लासेस पे जो डिफरेंट शेड्स और सनग्लासेस पे जाओ से तुम्हें डिफरेंट कलर देखा नॉर्मल लाइट रे जोड़ा देखो तो डिफरेंट शेड्स ऐड वाले से कौन कलर टा चेंज हुई तो ये जो प्लेट हुआ दोस आर प्लेट which will either add color or subtract color माने कलर ऐड कर पाते कलर सब्सट्रैक्ट कर पाते विद इन द स्टेज भीतर जो मिनरल था जो इंटरफेरेंस फिगर था ता भीतर कलर माने ऐड करंती नल सब्सट्रैक्ट करंती जहा थ्रू रे हमें जानि परिबे जे whether the uniaxial mineral or in case of biaxial mineral is positive or negative so हमें गोटे प्लेट नहीं देखिबा फास्ट gypsum plate so gypsum is a कौन gypsum plate it is a red color plate এটা কোন था the red color plate so when we insert a gypsum plate insert करा जीवो so तुम्हें स्टेज रो तळे आक रख पारा नल गोटे ऊपर थाए हला so it is a plate which will add and subtract color in different part of the interference figure से गोटे इंटरफेरेंस फिगर रे डिफरेंट पार्ट रे ए कलर एडिशन करि पारे नले सब्सट्रैक्शन करि पारे so this is the mineral when we add color when we will add accessory plate the gypsum plate will change the color before it was gray एटा कोन था ग्रे थिला अभी के तीटा अपोजिट क्वाड्रेंट रे कोन अछि ब्लू अछि एंड अनदर तीटा रे येलो अछि तो ये जो color change हुए in different quadrants that will determine the optic sign से द optic sign determine करबे तो जेतबे हमें gypsum plate insert करंदी so gypsum is a gypsum गोटे mineral तार भी slow और fast direction थाए so most तुम जेते भी accessory plate थाए तादरे slow direction mention कराई थाए कि this is your slow direction of the mineral gypsum रा red plate एटा तार शो कराई थी कि this is your slow vibration direction मतलब आर्ट में जो कलर चेंज है ताको हम केमिति जानिबा जे इट इज अ ऑप्टिकली पॉजिटिव और नेगेटिव मिनरल हमें ठीक प्लेट ऐड करेंगे सो एक्सेसरी प्लेट इज ऑलवेज इंसर्टेड in southeast and northwest quadrant. It is always inserted in southeast and northwest quadrant. सब कौन southeast और northwest quadrant रे insert करा जाए
तो एक्सेसरी सब ए एला कोन साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट रे तुम इंसर्ट करिवो जेतरे इंसर्ट करा हला सपोज दिस इज द स्लो डायरेक्शन एटा हो स्लो डायरेक्शन इट इज जिप्सम प्लेट it will produce blue color and yellow color तो रेड प्लेट जेतले ग्रे सहित आड हे जो एटा ब्लू हो तो रेड प्लेट जेतले येलो सहित माने ग्रे सहित सब्सट्रैक्ट हे जो एटा येलो ताबे दीटा कलर मिसांती दीटा वेवलेंथ मिसी की अलग गोटे प्रोड्यूस करि पारे नहले दीटा वेवलेंथ सब्सट्रैक्ट हे जो आ गोटे कलर प्रोड्यूस तो सेटा जोटा तुमरा डिफरेंट कलर अछि रेड ग्रीन ब्लू ए तुमरा येलो सियान मैग्नेटा मैजेंटा ए सब जो कलर अछि तो से सब कलर को ऐड करी अदर कलर प्रोड्यूस कर तो सेवाटी ग्रे कलर सहित रेड कलर तले मिसिला जिप्सम हाउस रेड प्लेट तो मिसिला ब्लू और येलो प्रोड्यूस होला डिपेंडिंग अपॉन द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बादर में केमिति जानिया सो गोटे जिस मन रखिबा एठी स्लो एक्सेसरी पैरेलल टू मिनरल फास्ट color decrease व subtract कर रहे हैं slow accessory parallel to mineral slow color increase बाद में क्या करबा एडिशन तो जदि स्लो एक्सेसरी सहित मिनरल फास्ट एक्सेसरी स्लो डायरेक्शन सहित मिनरल फास्ट डायरेक्शन जदि पैरेलल होची ताले से जगह कलर डिक्रीज करिवो एक्सेसरी स्लो डायरेक्शन मिनरल स्लो डायरेक्शन सहित पैरेलल होची ताले कलर इंक्रीज करिवो तो केनी जानिबा मिनरल वाइब्रेशन डायरेक्शन हमें प्रूव कर लेथि एटा होची तमर ओमेगा देखि ओ रे रा एटा होची एप्सिलॉन हुस्का ई रे वाइब्रेशन डायरेक्शन ये जो स्लो डायरेक्शन अछि ये कहा से तो पैरेलल अछि एटा ई रे ओ रे तो स्लो एक्सेसरी पैरेलल अछि ई रे से स्लो एक्सेसरी पैरेलल अछि ई रे सहित एंड से क्वाड्रेंट जोटा हम चूज करछन सेठी कलर होची इंक्रीज करछ केना ब्लू होची एडिशन को इंडिकेट करे इंक्रीज को इंडिकेट करे तो स्लो एक्सेसरी व्हेन इट इज पैरेलल टू extraordinary and color is increasing so को कंडीशन में कलर इंक्रीज करिवो यदि एक्सेसरी स्लो मिनरल स्लो से तो पैरेलल होय ताल कलर इंक्रीज करछ तो एक्सेसरी स्लो एटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से तो पैरेलल अछि आ कलर इंक्रीज करछ ता माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ता कोन स्लो रे सो एटी स्लो रे डिटरमाइन कलो तमे होची ई रे तो ई रे होती स्लो रे तमर वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी तो गोटे स्लो हेले आरटा फास्ट हो तो एटी मैं डिटरमाइन करि पारला जे वेलोसिटी ऑफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन सॉरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी so this will be mineral will be uniaxially positive मिनरल का पॉजिटिव आ गोटे क्वाड्रेंट नै कि हमें देख परिबा सपोज एठी हमें देखो सुती ए क्वाड्रेंट रे तो एटा हला ओमेगा ओ रे एटा हला एप्सिलॉन ई रे तो एटी स्लो टा कहा से तो पैरेलल अछि ओमेगा से तो ऑर्डिनरी रे से तो पैरेलल अछि कलर सेटी डिक्रीज करछ सो कलर केते डिक्रीज करिवो एक्सेसरी स्लो जेतले मिनरल फास्ट से तो पैरेलल हो कलर डिक्रीज करिवो so एक्सेसरी स्लो इट इज नाउ पैरेलल विथ ऑर्डिनरी रे and color is decreasing means ki ordinary ray is the faster one so same condition variable velocity of ordinary ray greater than velocity of external ray will be positive which bala can take any quadrant chapter में frequency quadrant नहीं कि तुम्हें ordinary ray external ray vibration direction show करेगा and देखियो axis of slow mineral को ray सहित parallel अछि आ से quadrant रे color कोन होछि
कलर जब इंक्रीज करूँ जहाँ सहित एक्सेसरी स्लो पैरेलल अच्छी सेटा हम स्लो यदि कलर डिक्रीज करूँ एक्सेसरी जहाँ सहित पैरेलल अच्छी सेटा हम फास्ट तो से जान पार in between ordinary ray and external ray which is faster से अनुसार we can also determine optic sign. So it will लिखा है इसमें मन रखियो एगुरा with fast ray of the mineral parallel to the fast ray of the accessory addition. Fast ray of mineral parallel to slow ray subtraction. Slow ray of mineral parallel to fast ray of accessory plate subtraction. Slow ray addition. एठी एक्सेसरी प्लेट भी स्लो फास्ट अच्छी मिनरल भी स्लो फास्ट अच्छी तो सबले मन रखो पैरेलल कथा कहू माने सेम थिंग हेले स्लो हेले कलर एडिशन हो फास्ट हेले कलर एडिशन देखि मिनरल स्लो एक्सेसरी स्लो पैरेलल एडिशन हो मिनरल फास्ट एक्सेसरी फास्ट पैरेलल एडिशन हो और फास्ट स्लो हैला ताले सब्सट्रैक्शन हो